Hello everyone, welcome once again in our class. So in the previous class we discussed about some examples. Up to this example we are discussed in the previous class that find the 5 plus 5 5 plus 5 5 5 up to n terms. Okay. This is actually the series. Okay. Then see the next example which is very similar to this one. Find the sum of the n terms of this series. Zero point 0.3 plus 0.33 plus 0.333 up to n terms. Okay. So as we solved previous example, we have to solve this one also. See, Sn we consider Sn is this. Okay. Three common ले लिया, so 0.1 plus 0.11 up to this n terms we remaining here, then multiply and divide by 9. Okay, so 3 by 9 they should be divided and here multiply by 9, so 0.1 into 9 is 0.9, 0.11 into 9 means 0.99 and so on, right? Then 0.9 can be written as 1 minus 0.1 and 0.99 is written as 1 minus 0.01 and so on, right? इसी तरीके से पिछले एग्जांपल भी सॉल्व किया था हमने. Okay, then this 1 and minus 0.1 can be split up like this. Okay, then first term see here, that is 1, therefore a is equals to 1 in the first bracket and r is equals to 1, that is common ratio. In the second bracket first term is 0.1 and common ratio is 0.1. Okay, so by using formula we got n minus 0.1 into 1 minus 0.1 to the power n divided by 1 minus 0.1. Then 1 minus 0.1 is, that is 0.9. Okay, that should be taken out common. 0.1 by 0.9, that is 1 by 9, and remaining is numerator 1 minus 0.1 to the power n. This should be the result. And in this way we solved some examples. ये भी एग्जांपल इसी तरीके से सॉल्व करना है. फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. हियर tn फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है. ओके, सो t1 मतलब फर्स्ट टर्म 0.4 है, राइट? t2 is 0.44 second term, it is third term and so on. So tn is the sum of the n terms, add कर दिया. Okay, then a equals to 0.4, r is 0.1, put in the formula of tn, we got the answer, right? So in this way we used to complete this example. Also try to solve this example also, find the gp. We would take this theoretical example here. Teacher wanted to reward a student by giving some chocolates. Okay, we gave the student two choices. He could either have 60 chocolates at once or he could get one chocolates on first day, 2 on second, 4 on third day and so on for 6 days. Which option should students choose to get more chocolates? Okay, so आपको एग्जांपल समझ में आ ही गया होगा, वेरी सिंपल लैंग्वेज में है ये. वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द चॉकलेट्स इन 6 डेज. ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या दिखा है, या तो 60 चॉकलेट्स उसको लेना है या फिर हर रोज उसको चॉकलेट्स का ऐड करते करते, जैसे पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे डबल डबल हो रहा है हर दिन, तो 6 दिन का. तो वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द chocolates in 6 days. Then we obtain which one is the greater number, either 60 or in the 6 days. Okay, so according to second option, teacher give 1 chocolate on the first day, 2 on the second, 4 on the third, मतलब हर दिन डबल डबल हो रहा है. So a is equals to 1 है, r is equals to 2r according to that. So Sn is equals to this formula we know, and therefore we find S6. S6 equals to 1 into 2 to the power 6 minus 1 upon 2 minus 1. 2 minus 1 is 1, 1 by 1 1, 2 to the power 6 minus 1, 2 to the power 6 is 64 minus 1 63. अब उसको 60 चॉकलेट्स लेना एक बार का ये होगा कि 63 चॉकलेट्स, दोनों में से 63 ज़्यादा है, इसलिए स्टूडेंट्स ये ऑप्शन चॉइस कर सकता है. Hence the student choose the second way to get more chocolates, right? So in this way some theoretical examples are solved again in your textbook. See this one,
This is also the theoretical. Okay, see this one, that is Mr. Pritesh got a job with an annual salary package of 4 lakh, okay, with the 10% annual increment. Find his salary in the 5th year and also find his total earning through salary in 10 years. Okay, given है 1.1 to the power 4 का value and 1.1 to the power 10 का value, right? So again we have to find the first of here two things we have to find here. First, his salary in 5th ईयर, 5 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी रहेगी, ठीक है, 4 लाख एनुअल इनकम के साथ वो ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर प्रीतेश. 10% एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा है. ओके, so in the year he will get salary of 4 lakh. He gets increment of 10% of in the second year his salary. Okay, so 110 divided by 100, 10% इंक्रीज हो गया. ये मतलब सेकेंड ईयर उसकी सैलरी हो गई 4,40,000. ठीक है, बिकॉज 4 लाख का 10% होता है 40,000. ओके, so that should be added here. In the third year his salary will be, तीसरे साल सैलरी कितनी हो जाएगी, तो दूसरे साल हो गई, क्योंकि पहले साल तो 4 लाख होगी, दूसरे साल 4,40,000, तीसरे साल हो जाएगी 4,40,000 का 10%. एक्चुअली 4,40,000 का 10% 44,000 हो जाएगा. ठीक है, सो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं 44,000. So add 44,000 means 4,84,000 should be the salary in the third year. Okay, hence it is a GP with a first term is 4 lakh because it is a sequence. We find a sequence here and R is equals to 1.1. 1.1 is what? That is a difference between the two terms here. Okay, so T fifth actually, so salary in the 5th year T fifth 5 equals to A into R to the power 5. A is 4 lakh, R is 0.1, that is 110 by 100 to the power 4. इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.1 to the power 4 is this 1.4641. So 1.4641 into 4 lakh, that's why 85,640. It is the salary in the 5th year. Okay, now total income in the 10th year. So S10 समीशन ऑफ द टोटल इनकम 10 साल में कितना आएगा उसको, तो समीशन निकालना पड़ेगा सम ऑफ द इन टर्म्स फॉर्मूले से. S10 इक्वल्स टू A into R to the power n minus 1 upon R minus 1. Okay, so 4 lakh, A is 4 lakh, R to the power 10 का भी वैल्यू दिया हुआ है, right? This one R means 1.1 to the power 10 is this. Okay, then minus 1 upon R minus 1 is 0.1, right? So calculate 2 point something minus 1 upon this 1.593474 divided by 0.1. ठीक है, 0 पॉइंट हटा दिया तो ये 15 हो जाएगा. 15 into this is 63,74,960. 63 lakhs 74,960 इतना इनकम वो 10 साल में उसको पेमेंट में से मतलब सैलरी में से मिल जाएगा. So Mr. Pritesh will get the 5,85,640 in the 5th year package, and his total earning through salary in 10 years is 63,74,960. Right? So in this way, we have to solve some examples. Try to complete that examples. Okay. Then, okay. Now see the next topic, that is sum of infinite in terms of GP, right? So sum of the infinite in terms of the GP, some formula of that is Sn is this 1 minus R to the power n minus upon 1 minus R. This one approaches A upon R 1 minus R. Okay, so consider a GP of positive terms. The sum of the first n terms is find out by using this formula. This is used as this one also, 1 minus R to the power n upon R1 minus R, or R to the power n minus 1 upon R minus 1. If mod of R is greater than 1, R minus 1 is constant, but R to the power n approaches to infinity. As n approaches to infinity, so the infinite terms cannot be summed up. Okay, and if mod of R is less than 1,
then r to the power n approaches to 0, that is n approaches to infinity, and the sum of the n terms is by using this formula. So here the infinite sum is summation of r is equal to 1 to n of tr is said to be a upon 1 minus r, right? So try to understand some examples. Example, this is the very easy. This is the series. We have given series a equals to 1, first term, difference is 1 by 2, mod of r is less than 1, right? Mod of r is less than 1, that is 1 by 2. Sum to infinity is given, a upon 1 minus r का वैल्यू आ जाएगा 2, right? See the solved example. Determine whether the sum of all terms in a series is finite. In case it is finite, find it. अगर finite series है, okay, then we have to find the series number in that. First है 1 by 3, 1 by 3 square, 1 by 3 cube, and so on, right? So see how we solve this. Here first term is 1 by 3, mod of r is 1 by 3 means less than 1, and if less than 1, that is sum of the finite term is sum of the infinite term is finite है. So s equals to a upon 1 minus r. A is 1 by 3 upon 1 minus 1 by 3. 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. 1 by 3 upon 2 by 3 is 1 by 2. So this should be the number. Okay. Then second see here, second number series क्या दी हुई है देखो, that is 3 by 5 minus 9 by 25, 27 by 125 minus 181 by 625. This should be the given series. So a is 3 by 5, r is 3 by 5, mod of r is minus 3 by 5, that is less than 1 again. ठीक है, mod of 5 चेक करके देखा है, that is less than 1 again. So इसका फॉर्मूला वही हो जाएगा और रिजल्ट आएगा 3 by 5. ठीक है, सो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स. थर्ड है 1 minus 3 9 minus 25. ठीक है, तो अगेन a equals to 1 है और r equals to minus 3 है, mod of r is 3 हो जाएगा, that is not less than 1, that is greater than 1. okay, so sum to infinity does not exist in this case. Okay, so see next topic, that is expression recurring decimal as a rational numbers, right? So this is the next topic. Okay, expressing recurring decimal as a rational number. Okay, so we know that the recurring decimal fraction can be written as a rational number. Example है 0.6666 अगर है तो उसको आप 0.6 बार, ये रिकरिंग नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. 6 को बार क्यों दिया हुआ है? बिकॉज 6 नंबर इज रिपीटेड. ओके, तो 6 को बार दिया. इसको हम 2 by 3 भी लिख सकते हैं. 0.6 मीन्स 2 by 3. तो ये रैशनल नंबर है, तो हमने रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लिया इस तरीके से. दिस कैन आल्सो बी चेक यूजिंग जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी हम चेक कर सकते हैं. देखिए जैसे 0.66666 है. ओके, ये एक रिकरिंग नंबर दिया हुआ है, तो इसको हम 0.6 प्लस 0.6 सीरीज के फॉर्म में से लिख सकते हैं. अब इन टर्म्स ऑफ जीपी a is equals to फर्स्ट टर्म है 0.6 और r mod of r है, डिफरेंस है 0.1, that is less than 1. so is sum to infinite terms is finite and is a upon 1 minus r से फाइंड किया तो 2 by 3. इस तरीके से हम एक रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? सिमिलरली सी हियर 0.46 का बार दिया है. अब यहाँ पे 4 और 6 दोनों के ऊपर बार है, यानी 4 और 6 कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं, दोनों रिपीट हो रहे हैं. ओके, सो 0.46 प्लस 0.0046 प्लस 0.000046 अप टू सो ऑन, राइट? अगेन हियर फर्स्ट टर्म इज a मतलब 0.46 हो गया और डिफरेंस अगर हम फाइंड करते हैं तो mod of r लेस देन 1 है, मतलब सम टू इनफाइनाइट टर्म्स इज फाइनाइट, और फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो 46/99 आंसर आता है. मतलब हमने फिर से ये एक रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट? सो इन दिस वे वी सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप वेरी इजीली. ओके, देन सी द नेक्स्ट टॉपिक, that is harmonic progression, right? Harmonic progression, that definition of this is, see, a sequence
T1, T2, T3 up to Tn, where T not equals to 0 and small n belongs to capital N, where capital N is the set of natural numbers, is called harmonic progression if 1 by T1, 1 by T2, 1 by T3 up to 1 by Tn are in AP or in arithmetic progression. Okay, मतलब ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब होगी, जब इसका रेशियो का सीक्वेंस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए 1/7, 1/11, 1/15 आर इन एचपी एज 7, मतलब इसका रेसिप्रोकल 7, 11, 15 आर इन एपी। ओके एंड सो ऑन। ये सेकंड एग्जांपल है। सो इस तरीके से इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, और दिस शुड बी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और यहाँ पे एक चैप्टर खत्म है बिकॉज इसके आगे का पोर्शन डिलीट किया हुआ है सिलेबस में से, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होगा और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ नेक्स्ट क्लास के बाद हमारा रेगुलर क्लासेस शुरू रहेंगे डेली। सो ट्राई टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली बिकॉज द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आर कमिंग्स टू गोइंग ऑन, राइट। आने वाले चैप्टर्स का भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, सो सी दिस some examples of the HP. Find the nth term of the HP. ये HP दिया हुआ है, HP मतलब को चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर ये HP है तो इसका रेसिप्रोकल का सीरीज जो ये है ये AP होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, अब AP है मतलब फर्स्ट टर्म हो गया 1 2 और डिफरेंस है 1/2, 5/2 माइनस 2 करोगे तो 1/2 मिलता है। हेंस 1/2, 2/5 आर इन HP। ओके, so for AP Tn equals to your formula है a plus n minus 1 of into D। so Tn अगर हमने फाइंड कर दिया 2 is 2 n minus 1 into 1/2, इस फॉर्मूले से हमको मिल जाएगा Tn 3 plus n by 2। ओके, therefore HP में Tn क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, बिकॉज ये AP का Tn है। for AP this should be the Tn, sum of the n numbers। now for HP it is a reciprocal, so it is 2 upon 3 plus n। this should be the Tn, that is sum of the n numbers, or say nth term in HP, right? Then see the next example, that find the nth term of HP। again nth term में same example होगा ये। see इसको आप रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट करके a और d की वैल्यू निकाल ली। ओके, देन Tn फाइंड कर दिया AP के लिए और उसका रेसिप्रोकल मतलब Tn in HP। ओके, then see the next topic, I think okay, this is one of the topic remaining, that arithmetic mean, in short AM। arithmetic mean मतलब average actually। so if x and y are two numbers, their arithmetic mean is x plus y plus divided by 2, that's average। okay, we observe x capital A, y from an AP, that is a minus x equals to y minus a, therefore twice a equals to x plus y, so a equals to x plus y by 2। कैसे आया समझ क्या होगा आपको ये। ठीक है, जैसे जो a माइनस इधर आया तो प्लस a, ट्वाइस a इक्वल्स टू x, और माइनस x इधर आया तो प्लस x, x plus y, so a equals to x plus y by 2, right। so next is geometric mean। geometric mean is indicated by in short GM, और फॉर्मूले में हम G बोलेंगे कैपिटल G, and that should be square root of x and y, where x and y are the two numbers। okay, we observe x g y from a GP, so capital G by x equals to y by g। sorry to be continue, geometric mean GM, again if x and y are two numbers, then geometric mean is indicated by capital G, that should be square root of x y। okay, and that should be find out by using this way, right। so see next is harmonic mean, right, that is arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean। again x and y are two numbers, then their harmonic mean is indicated by capital H in formula, and that is find out by equals to twice xy upon x plus y। okay, ये इस तरीके से इसको फाइंड किया हुआ है, हमको फॉर्मूला याद रखने हैं एग्जांपल्स के लिए। arithmetic mean x plus y by 2, geometric mean capital G is equal to square root of xy, harmonic mean twice xy upon x plus y, in this way। okay, let's try to solve some examples depending on this, and we complete this chapter here, and from tomorrow, or from better way to say from tomorrow, from next class we start the next chapter, which is a important one, right, which is the base of the second part of the mathematics, that is complex, starting from the complex number and so on। okay, so we see
So try to complete the classes in the regular way. Okay, काफी दिनों से गैप हो रही है मेरे क्लास में, so that should be very, this is not good for us. Okay, but आगे से हम अभी रेगुलर क्लास कंटिन्यू करेंगे, so try to see all the videos of माय सब्जेक्ट. ओके, और जो भी होमवर्क रहता है, जो भी एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करनी है, आप कर सकते हैं. और कुछ अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं. और इसके आगे का पार्ट जो है एक्चुअली वो डिलीट किया हुआ है इस साल के लिए. सो ट्राई टू कंप्लीट द chapter examples of this chapter up to this topic also only. Okay, then from the next class onwards we start the next chapter, right? Okay, thank you.